Hello everyone, I'm Megha Thakur. Today we are going to discuss Buddhism. 6th century BCE was a period of great religious upheaval. ये जो दौर था इसमें काफ़ी उथल पुथल हुई समाज में, सिर्फ ना ही हमारे इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में. Great teachers like Confucius in China, Zoroaster in Iran and Parmenides in Greece questioned the established socio-religious norms and focused more on ethical and moral values. In India, अगर हम बात करें इंडिया की तो conditions was not quite too different from the world. India also witnessed the growth of two great alternative religions, which were Buddhism and Jainism. These religions emphasize that true happiness does not lie in the material prosperity or performance of rituals, but in non-violence, which is ahimsa, charity, dan dharma, frugality, mitvayata, and good social conduct. That means how we behave with the other living beings. Moving toward the causes of its origin, the Kshatriyas' reaction against the domination of ब्राह्मणास. जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा जो वैदिक समाज है वो 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, जिसमें ब्राह्मण एवं क्षत्रियों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे. इस तरह के वर्ण विभाजन वाले समाज में एक तनाव की स्थिति निर्मित हुई जो इन धर्मों के उदय का कारण बनी. Second one is patronizing of Buddhism and Jainism by Vaishyas and other mercantile groups who wanted better social status and reign of peace. इस धर्म की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो वह यह है कि इसमें कोई जातिगत भेदभाव नहीं था, सामाजिक चेतना का संचार था, कह सकते हैं, सांसारिक समस्याओं पर केंद्रित था, जनसाधारण की भाषा पाली का प्रचार प्रसार था, जबकि अगर हम दूसरे धर्मों की बात करें तो वह संस्कृत पे फोकस थे. संघ में प्रवेश को लेकर जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था. नाउ द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म. बुद्धिज्म की बात करें, बुद्धिज्म कहता है वन शुड नॉट क्लिंग टू एनीथिंग including his teachings. According to this religion, the teachings are only upay, are thus not dogma. That means if the finger is pointing at the moon, and one should not confuse the finger for the moon. There are 3 main pillars of Buddha's teachings, which are Buddha, Dhamma, and Sangha. Buddha is the founder, the teacher. Dhamma stands for his teaching, what he teaches, what he taught. Sangha, order of Buddhist monks and nuns. Buddhism emphasized on ethical code of conduct. They said, do not commit violence, do not covet the property of others, do not indulge in corrupt practices or sensual behavior, do not speak a lie. While struggling for enlightenment, Buddha, which is the founder of this religion, he discovered 4 noble truths which form the central teachings of Buddhism. We can say the whole religion surrounds around the extract of these 4 paths. These noble truths are: first, the first noble truth is the truth of suffering. He said, Sabam Dukham. Second, the truth of the cause of suffering, which is Samudaya. Third, the truth of end of suffering, which is Nirodha. And the fourth one is the truth of the path of leading to the end of suffering, which is Ashtangik Marg. आइए बात करते हैं बुद्ध धर्म के संस्थापक के जीवन के कुछ मुख्य बिंदुओं पर. इन्हें एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है. महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन तथा रानी महामाया के यहाँ हुआ. 29 साल की उम्र में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया. 35 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई.